हाय फ्रेंड्स, आज लॉजिक परीक्षा सरीगला तार ग्रुप ए रो मु उत्तर गुड़ डाकिदेवी किंतु एटा होची कोन सेट ए रो ग्रुप ए क्वेश्चन आंसर गुडा को कहि दोची जोडा अछि एमसीक्यू आउ फिल इन द ब्लैंक्स ताको देखि दो करेक्शन कर दो आउ अन्य सेट गुडी को कोठी से उत्तर रहिबो तम तमर खोजिकरी देखिबो मु केवल सेट ए पई उत्तरटा कर दीची। Who had said truth is God? एटा एक नंबर एमसीक्यू रे अछि गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, नन ऑफ देम। एटा गांधी जी कहतिले तेनु एक नंबर रे अछि। एक नंबर क्वेश्चन आंसर एटा आई अर्थात गांधी। ताबरे बी रे व्हाट इज द ओवर्स ऑफ एन ओ प्रपोजिशन? ओ प्रपोजिशन ओवर्स कोन तेणु एटा हम जानि जे बी रे एटा हो आई उत्तर हो आई अर्थात आई प्रपोजिशन। सी रे हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ डिलेमाज आर देयर? ए क्वेश्चन रो उत्तर ता हबो सेकंड आई। सी रे सेकंड आई अर्थात 4। डी रे नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन p इक्विवेलेंस q। तेम से जो चिन्ह दिया है एटा को चिन्ह बोली दर्शाइबा से कहि तेम एटा है कोन इक्विवेलेंस फंक्शन i d टा हला i इक्विवेलेंट फंक्शन। e रे हाउ इज द फिगर ऑफ ए सिलोजिम डिटरमिन्ड? हाउ इज द फिगर ऑफ ए सिलोजिम डिटरमिन्ड? यार ऑप्शन देछि by the position of a major term in the premises, by the position of the minor term in the premises, by the position of the middle term in both the premises, none of these. यार आंसर ता हबो थर्ड आई। ई रो आंसर हला थर्ड आई by the position of the middle term in both the premises। तापरे क्वेश्चन F name the figure of the mood philapton। फिलाप्टन तार एटा को फिगर रे अछि से देछि कोन ऑप्शन रे फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर। तेनु आंसर ता हबो थर्ड फिगर। आंसर ता हला थर्ड फिगर। ए रहला 3i थर्ड फिगर। जी इन सिलोजिम द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज सेड टू बी। एते कोन कहै छी द प्रेडिकेट ऑफ अ कंक्लूजन इज सेड टू बी। कंक्लूजन रो प्रेडिकेट को कोन कहा जाय? एटा हबो आंसर हबो आई मेजर टर्म। आंसर हला आई। जी रो आंसर हला आई मेजर टर्म। एच व्हिच एक्सपेरिमेंटल मेथड इज नोन एज स्टैटिस्टिकल मेथड? ऑप्शन देछि मेथड ऑफ एग्रीमेंट, मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ रेसिड्यू, मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन। तार आंसर का हबो आईवी। एच रो आंसर हला आईवी कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन। क्वेश्चन आई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीकेंड मोड? कोन कोन देछि डारी आई रे देछि डारी आई डाक्टिसी, थर्ड आई सिसारे आउ फोर्थ रे देछि सेलारो। आंसर ता हो फोर्थ सिलारो। आई रो क्वेश्चन आई रो आंसर हबो 4 सिलारोन। तब जे क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन? कोटा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नुहे। एठी टिके से चालाकी रे पकई देछि जहा फल कि जो माने नागेलकर विषयटा जानि थिबो से माने ही ठीक रे करि परिबो। प्रथम आई रे देछि डिडक्टिव मॉडल, सेकंड आई रे देछि प्रोबेबिलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, थर्ड आई रे देछि फंक्शनल एक्सप्लेनेशन, फोर्थ फॉर्मल्स एक्सप्लेनेशन। एथरे आंसर का हबो जे रो आईवी फॉर्मल्स एक्सप्लेनेशन। जदियो से फॉर्मल्स का कोनसी ना नाही किंतु से एक्सप्लेनेशन लगै देछि पिला माने एटा दरदर पड़ी के कर देबे। के
point out the fallacy in the following argument. Night is the cause of the day. यार ऑप्शन देछि illicit generalization, second आइले ignorance of elenchi, third आइले fallacy of taking co-effects as cause, fourth रे none of these. यार थर्ड का ठीक हबो, के रो थर्ड आइटा ठीक हबो, taking co-effects as a cause. L रे question L, what is the conclusion of a simple constructive dilemma? जेहेतु simple ना देछि यार निश्चय conclusion टा categorical हबो. तेनु ऑप्शन देछि कोन alternative proposition, दुई रे hypothetical proposition, थर्ड रे disjunctive proposition, फोर्थ रे categorical proposition. आंसर टा हबो फोर्थ categorical proposition. L रो क्वेश्चन L रो आंसर हैला फोर्थ categorical proposition. तापर M, which experimental method is essentially a method of deduction? ऑप्शन देछि मेथड ऑफ रेसिड्यू, सेकंड रे देछि मेथड ऑफ एग्रीमेंट, थर्ड रे मेथड ऑफ डिफरेंस, फोर्थ रे मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन. यार आंसर का हबो एक का फर्स्ट है, अर्थात एम रहबो एम रहबो फर्स्ट है मेथड ऑफ रेसिड्यू. एन, टू व्हिच मोड डायरेक्टली कैन बी रिड्यूस्ड डायरेक्टली. एथे ऑप्शन देछि बारबरा, सेकंड ऑप्शन देछि डायरी, थर्ड रे सिलारेट, फोर्थ रे फेरियो. तेबे एटा एन रो आंसर हबो सेकंड आई डायरी. तापर क्वेश्चन ओ, व्हिच टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन आई प्रपोजिशन. ऑप्शन देछि सब्जेक्ट, सेकंड ऑप्शन देछि प्रेडिकेट, थर्ड रे देछि बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फोर्थ रे देछि नाइदर द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट. यार फोर्थ रे ठीक हबो, और हबो आईवी नाइदर द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट. तेबे एक नंबर आमे जानि गले. दुई नंबर फिल इन द ब्लैंक्स. तेबे दुई नंबर क्वेश्चन के आसीबा फॉर डायरेक्ट रिडक्शन. ए रे देछि फॉर डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ अ बारोको इट इज रीनेम्ड एज डैश. दुई नंबर फिल इन द ब्लैंक्स. ए रहबो फाक्सोको, ता डैश प्रोनटा हबो फिल इन द ब्लैंक्स जहा रहिछि सेटा हबो ए रहबो फाक्सोको. बी रे अकॉर्डिंग टू नागेल डैश काइंड्स ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आर देयर. फोर काइंड्स. आंसर रहला फोर, बी रहबो फोर. तापर सी, P conjunction Q is an example of a dash function. एटा ला conjunctive function. C रहबो conjunctive function. D, in overson the conclusion is called dash. D रा आंसर रहबो overse. E, according to Aristotle's dictum dash figure alone is the perfect figure. First figure is the perfect figure. E रहबो first figure. F, in dash figure O cannot be a conclusion. ये जो क्वेश्चन टा F रा देछि एटा हला रॉन्ग क्वेश्चन. ए क्वेश्चन टा भूल देछि. तेनु एटा हेइथांता कोन इन डैश फिगर O cannot be a premise. ताले जहा क्वेश्चन भूल देछि अर्थ तमे जदि अटेंड करिवो एटा निश्चय नंबर पाइबो. तेबे एटा जदि आमे करिबा एटा तो भूल जे क्वेश्चन देछि उत्तरटा किछि बाहरिबो नै रॉन्ग. ताले जदि एटा कंक्लूजन नहि कि प्रीमिस हे जांदा तेबे फर्स्ट फिगर एंड फोर्थ फिगर हे जांदा. जी, रामचंद्र इज द सन ऑफ दशरथ. अतएव दशरथ इज द फादर ऑफ रामचंद्र. तेबे एटा हिछि कोन ना डैश देछि उत्तर आमे कोन करबा ना पेटिसियो प्रिंसिपल. रामचंद्र इज द सन ऑफ दशरथ, अतएव दशरथ इज द फादर ऑफ रामचंद्र.
this argument involves the fallacy of a dash. It is dash to have a petitio principii. H. Vyakti is the relation of an invariable concomitance between sadhya and dash. Your answer to have a now vyakti is the relation of an invariable concomitance between sadhya and hetu. H rahla hetu. H hetu. Tapre I. In dash figure, at least one premise must be negative. In second figure, I have a second figure. J. The converse of an E proposition is E proposition, and the converse of an I proposition is an I proposition. This is called dash conversion. This is called simple conversion. Tebe J rahela answer ta simple. K. Anvaya means agreement in presence. Dash देख जोटा से dash टा हवा presence. Anvaya means agreement in dash. तब से dash टा हमें लिखी दवा agreement in presence. L. In inductive inference, the conclusion can be dash general than the premises. इधर देखिए conclusion can be dash general. एथरे टिके मुंड खर्च करिया पड़िबो कोन ना से दे दिछि कोन इंडक्टिव इन्फरेंस देछि डिडक्टिव देइ नै डिडक्टिव देथिले हिथांता लेस किंतु जेहेतु से एटा बदलाई देछि एटा हबो मोर जनरल दैन दी प्रेमिसेस तेनु एटा हबो आंसर हबो मोर M. The fallacy of dash is committed in the following argument. Argument कौन देजी? The old man died soon after the arrival of the newly wedded bride. So the new bride is the cause of the death of the old man in the house. Your answer to have post hoc ergo propter hoc. Post hoc ergo propter hoc. तामने A मेरा आंसर है post hoc ergo propter hoc. N. Dilemma is a form of dash syllogism. Dilemma is a form of dash syllogism. N ର answer ହେବ mixed. N ର answer ଦେଇଛି mixed. O. If one of the premises is particular in a syllogism, then the conclusion must be dash. If one of the premises is particular in a syllogism, then the conclusion must be particular. ओटा हबो particular. ओ पिला माने आमे ग्रुप ए रो सब आंसर तक कहि देले तम निजे निज सेट अनुसार जोठी से क्वेश्चन टा अछि जोटा हम पढि देछि तम सेटा देखि निजे आंसर टा ठीक कर दबो. अच्छा ताहले आ गोटे कथा मन रखिबो इथि जोडी गोटे देछि भूल क्वेश्चन पके देछि एवं सेटा जे अटेंड खाली कर देथिबो से भी नंबर पाइबो. हो पिला थैंक यू.